Hello and welcome to Yes. everyone. Hello and welcome to everyone to Field Vision's episode 18. Today you have uh, Ritwich with us, who's been a guest in this talk show that we host for quite some time. We also have Dhyan joining us. Dhyan is based in Gujarat, and he's probably, if I'm not wrong, a Manchester City fan. And then you have Yeah, Rutvich, yeah. who's a Manchester United fan. And today we'll basically be touching upon the Premier League, since we have the big Manchester derby, and also side by side. We'll also in the later part of the show touch upon Indian football and the AFC draws that were out this week, sorry, and we'll touch on that also. So starting up, Dhyan and Ritvich, your thoughts on the Manchester derby, and particularly how both your sides are doing, which, well, currently, like my side in Indian football, is not good. So yeah, over to you guys. Like, what do you guys think about the game today? I'll speak first. I'll speak on United's part. United, ever since Amorim has taken over, the results in Premier League haven't been that consistent yet. He's only managed 5 games as yet, but but you see a pattern going, and you see a certain brand of football that Amorim likes to play. So I believe, I won't say we have a better chance or they have a better chance. Uh, from United perspective, this will be just another game, as Amorim said in the previous press conference. Uh, we'll see. I mean, there are issues with Manchester City, and Amorim knows how to defeat City. This season, he has done with Sporting just 7 games ago in the Champions League. So I am quite positive, but I'm not going over the moon as of now. We'll see what will happen. We'll take game by game and see, because currently, United are 13th in the points table, and they will have to reach top by the end of January. They'll have to reach around top six, top seven to even stake a claim by May for top four positions. United may qualify for the Champions League next season by winning the Europa League, but that's a distant dream. As of now, 1 game at a time, probably 21 more times. That's how it goes. Over to you, Dhyan. Dhyan, You're muted. You're muted. Dhyan, you're on mute. Hello, hello, hello. Yeah, yeah, we can Okay, hear you. yeah. Like सिटी तो अभी लाइक बहुत सारी इंजरीज के साथ फेस कर रही है, रोदरी नहीं है, तो अभी कोई डीएम लाइक जो डिफेंसिव मिडफील्डर अभी कुछ वो कोई मिडफील्ड कंट्रोल नहीं कर पा रहा है. लाइक आई वुड सजेस्ट अकांजी को डीएम में खिला के, पर तो बैकलाइन एक्सपोज हो जाएगी. बैकलाइन में अभी कोई है नहीं ऑप्शन. जॉनस्टोन से इंजर्ड है, आके इंजर्ड है, रूबेन Akanji, डियास और अकांजी लाइक मैं नहीं देखा वो. yeah, he's तो injured. नो आई डोंट थिंक सो. Uh, तो फिर तो क्या काल वॉकर सेंटर बैक खेलेगा? Kyle Walker, Rico Lewis. Rico is banned, no? Red वो card last game. या Oh man. मैच Wow. गया Wow. Bye. मैच गया. Wow. So all अभी in देख, all, what do you think कोवाचिच को about भी the स्टार्ट नहीं देंगे, वो भी अभी इंजरी से आया है. So all in all, what do you think about the game? What do you think about United? लाइक अभी मैं लाइक लास्ट जब से नया मैच आया तब से मैंने यूनाइटेड का मैच देखा नहीं अभी तक. लाइक लाइक ओवरऑल देखा था, वो
काफी लाइक यूनाइटेड का अभी लाइक ब्रांड ऑफ फुटबॉल अब अच्छा हो गया, वो सब देखा मैंने। उन लोगों का प्लेयर्स भी आ गए फिर से इंजरी से। वो वो सब लाइक देख के मुझे लग रहा है कि यूनाइटेड हैज अ स्टेप अहेड। chance. They are a step ahead. Right. So currently, when you look at the Premier Uh, League table, yeah, yes, Ritan bhai, go ahead. so the entire city defense that is in a mess, but like I feel like Gavidol to Gavidol or Ruben Diaz to खेलेगा, हाँ, and then you have Walker. So like, हाँ, is Pep going to switch to a back three, which he usually doesn't play with with, but लाइक वो experiment? एकेडमी का एक बंदा है, नहीं एकेडमी का एक बंदा है, नाम नाम भूल गया। वो बीच में खेला था, यूसीएल खेला था, स्टार्ट दिया था उसको। आई थिंक अच्छा, उसको खिला देगा। okay, The thing is with City, they are actually low on confidence and low on moral. uh, not just morally, physically as well, because at least 6 to 7 players are either injured or either suspended for the game. Plus, teams in the last 7, 8 matches where City has not performed well, they've exposed Kyle Walker time and again. So whoever's going to be the left winger for United, either Garnacho or Rashford, whoever it is, they'll once again look to expose Walker down the left, and on the right, United has a certain player called Amad Diallo who's been running riots ever since Eric Ten Hag was ex. Even in the 4 games during RVN era, he did quite well. He has that Messi-esque tenacity where the ball just grips on in his feet entire time whenever he wants. So he has that amazing control and amazing dribbling capacity because of his small height and small this thing and so I believe he's going to be a big headache for Guardiola. Yes, so this is what unite. This is And what what do you I feel think. about the United defense? United defense. I would personally say that the defense overall has improved. That the defensive weaknesses you see is either due to there are games that are coming every 3 days and the coach has to chop and change first. Second, I believe it is more down to individual errors than tactical errors. Back in Eric Ten Hag era, we had more and more tactical errors which would give space to opposition behind the back or somewhere in the midfield. But now, with Amorim joining, you don't see a tactical issue. In the last game against Victoria Pleasant in the Europa League as well, United were in control for the entire game. One goal they conceded was due to a mistake by Andre Onana, which happens when you play with a goalkeeper that plays with his feet. So that is the only defensive issue is not down to tactical, but it is more down to individual errors. Okay, and And like with it's just a moment. And with United's, I mean, now everyone's coming out of injury except Luke Shaw. So we have Harry Maguire who's fit. We have Victor Lindelof who's fit. We have Johnny Evans who's fit. So we have एंथनी a एज वेल। back, and Tini was is not in the defense. नहीं, ओके। So three, I mean, three center backs plus
three more reserve center backs gives you that advantage when where you can play either of them, and you could probably rest some of either of Licha Martinez or Matis de Ligt. And like, see, like for the past 2 3 seasons, we've seen City sort of have this slump during October, November, but again like in during Jan the Christmas. during and then but somehow in Jan Feb, ending of Jan and Feb, they sort of just hit the accelerator button. But this season, I don't see that happening until and unless something magical happens or they get that control in midfield back somehow. What do you feel, Dan? Like, possible this season also, or Like एक डिफेंसिव मिडफील्डर फील्डर की चाहिए जो लाइक कैरेक्टर शो कर सके मिडफील्ड में. अभी Like देख रोद्री रोद्री के एब्सेंस में अकांजी और कोवासिच हो सकते हैं डिफेंस में. आई मीन डिफेंसिव मिडफील्ड में जो रोल लाइक नॉट रोद्री के जैसे तो नहीं कर पाएंगे बट दे विल मैनेज. they will have to manage. या So this season, what I mean, what is happening is when you compare Arsenal last 2 seasons and Liverpool before that, both the teams either had a very Arsenal didn't have any injury issues last time around, but 2 to 3 seasons before that, Liverpool or Arsenal, someone has had this injury issue which came up in the Christmas period and post the Christmas period when there is actually the league where it is played, because during the Christmas period you have games coming thick and fast, but post the Christmas period you have that games every week. I mean, 2 games every 10 days. So you have that period to relax and then go and then play. Fortunately for City, all these years they had two teams. They had two teams where they could compete with anyone. Even if Haaland has this period every season where he goes missing for 5 to 7 games. But for the last 2 years, they had a certain player called Julian Alvarez who used to save him. Even on the left wing, they had someone called Raheem Sterling who was doing exceedingly well before they replaced it with Jack Grealish. Jack जग Grealish, ग्रेलिश. during the treble season, he had decent amount of success in the January February period, but post that this season he is not able to show his qualities that what Man City played 100 million for. And even Jeremy Dock, who is sort of a young, what you unpolished sort of player where he cannot make a decisive pass or anything. So that is there. So yeah, that is only the thing with City. Now probably we'll go to the title challenge. well, So as Like currently Liverpool are one down against Fulham with a red card. yeah, with a red card to Robertson. Yeah. Yes, so that is the thing. Sirijan bhai, you had to say something. well, like the title will anyone you ask currently will obviously predict Liverpool the way they've been playing under Arne Slot. Even Chelsea are playing good. Even Chelsea. And Chelsea have just sort of, finally found their way back into the mix of things, after spending what, around $1 billion or something like that. Yes, yes, And well, it's up to them. These two look to be good contenders. Arsenal again, it's like as they've been name tagged, set piece FC. You know, I don't see
anything else happening for them. But well, you never know. They, whatever happens, football is funny. Uh-huh. And then City, obviously, like, you never know कि उनका charge up कैसे जाए, in the later part of the season. But currently, as things stand, it's like Liverpool and Chelsea that seem to be a fit. I mean, this is a Liverpool. I mean, currently this is a Liverpool story where they end up doing the most Liverpool thing, and that is to slip. They did it twice before when City in 2018 and 2019. They were lucky in 2020. Again, they slipped in 2021. So this is Like 2021 so. में तो like they were 11 point ahead of Man City. Yeah, they were 11 points ahead and they bottled it Yeah, afterwards. So now also you see them 6 7 points ahead, but now nine uh, nine. Currently it is nine. Like only six if they lose today. PL table. Just a moment. They are with 35 points at the moment. Uh, just 4 points lead. If they don't, Liverpool don't equalize or don't pull their socks up, they'll just be 4 points ahead of Chelsea, uh, and with 23 games more to go, this could be anyone's game. And you have to understand the Mo Salah situation. Ever since he gave that statement, Yeah, uh, things. I mean, ever since that statement, they drew 2 games. They are losing this one. I hope they lose. As a United fan, I would never want to see Liverpool matching the 20 titles. I would rather want Chelsea to win it. It's okay. I mean, Chelsea fans troll us for 2 days, 3 days. It's okay, but you can't have 20 times. We are the only ones to sing 20 times, Man United. So we don't want the Liverpoolians to do that. And I hope Chelsea but sneaks in there. like Diego Jota and Chase are back with the squad. I mean, yeah, you would have that situation. I mean, they are not. There are 23 more games to go, and there is ample amount of time for both Chelsea and Liverpool to stake their claim Liverpool at just the title. equalized. Liverpool just equalized. Who did it? Oh damn, Mo Salah. No, 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 no. I'll have to Wow, see. one each. Who's that? Man, wow, shit. No, What? Cody Gakpo. Cody Gakpo. Cody Gakpo. Get oh shit, shit. Okay. I mean, now Even it's Arsenal, let's see Arsenal, what. even Arsenal is struggling against Everton. Yeah, Everton, you expect them to do well because Everton is a sort of a team where they do well against teams that are higher ranked, top six sides. They'll always turn up, and you have to remember that Everton has got 1 week extra uh, rest of 1 week because they had Yeah, their derby against Liverpool cancelled last weekend due to storm. So yeah. they are fresher than the Arsenal who played midweek and last weekend as well. So you'd expect Arsenal to struggle against Everton because Everton are fresh and these guys 2 games on a trot. So yes, you expect Arsenal to struggle, but set piece FC as Sirijon Bhai said, by set piece they can. I mean, how ironic would it be to have a set piece goal against Sean Dyche's team? Like I was just seeing the corner just a few minutes ago they took against Fulham. Sorry, Everton, and
If Saliba had headed the ball even a few inches either way, it was a sure shot goal. And like Pickford had no clue that the ball, he just stood there and the ball came to him. Otherwise, it would have been a sure shot goal. And like that's the only threat they could possess during that spell. Yeah, because Van Dijk's team likes to play that double decker bus of 4-4-2. So you'd expect them to, like, okay, come. You guys can come, but you have to go through that double decker lines, the midfield of ours. So that would be a challenge. Dhyan, another thing, you want to add something on the title race? I would go for Chelsea. Like Man City won't even be there in top four. I think looking like इंजरीज बढ़ रही है गेम्स ज्यादा होने वाली है जनवरी से Yeah, you guys could be out of UCL as well, because या 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 गुड next game you play PSG, and it's either do or die. If you don't get 3 points, you are done and dusted. You are 22nd in the table. Uh, PSG also are struggling, so they will also be wanting 3 points from the game. So it's either Guardiola or who's the लुचो Lucho Garcia, not Garcia. What's it? एनरिके Luis Enrique. लुचो Either लुइस one, एनरिके either one of them. Uh, yes, so that's about it. Sirajan, by your thoughts on the title challenge? As well as I said, it looks like at the moment, the way Liverpool is playing and the way Arne Slot has managed to, get the group together and get them in the flow, in especially in a transition season, from Klopp to the new manager. It's never easy, but they're showing good character. And yeah, Chelsea, well, you never know. Like, they have quality in their side, and they've found form. So yeah, I feel it's gonna be either one of these two. But then again, you never know the others if they just pop up and do something. Yeah, so now we'll have Dalal Bhai joining us as well in few minutes time. So now we'll just move to the AFC draws now, back to square one, back home, back to Indian football. So yes, Sirajan Bhai, go ahead. Oh, well, as it's we again get. I know a lot of people are saying India were pot one, very good group and stuff. Hi, when the draws for the World Cup qualifiers were out, when we had Qatar, Kuwait, as Qatar, Kuwait, Kuwait, Afghanistan. and India and Afghanistan, people were like, like, say we are going to round three. We know what happened. We failed to beat Afghanistan at home. We So lost. We didn't even win one. We didn't even draw. We lost. we lost at home against Afghanistan, a nation ruled by the Taliban. And well, yeah, They if we reached early. They reached Guwahati early than Indian team. A and nation. like we heard all these things from AIFF saying, we'll provide private jets and whatnot and whatnot. Yeah, private jet. Well, Afghanistan took a commercial airliner and reached Guwahati faster than you could from Abha, I think, in Saudi Arabia. So that's it, like, and currently the way I have trust in like Manolo as a coach, is probably the best coach currently in the country. But he's not a magician, and football isn't a sport in the Harry Potter world that you can just wave a wand and everything changes.
The problem lies within, like, as everyone can see, our football association is in a mess. Our leagues are not, you never know what is happening in the league, and like behind the scenes and stuff like that. So this draw also for me, I feel, we having Hong Kong, Singapore, and Bangladesh. Well, it seems easy. It seems easy, but then, let's be honest. Currently, Indian football is in a mess. The staff in AIFF that we've done in Field Vision. The story. The Oh viewers can man. read about it. The staff aren't happy. You currently have so many openings, like, because of so many resignations, you have so many openings in AIFF, in the core footballing part. So that is one issue. And then let's be honest, Manolo will need time with the squad. Currently he's just busy with the ISL, and we don't have much games before. I think before the qualifiers, I don't like, nothing has been lined up yet. Any preparatory games? Obviously, we know there'll be a camp, like there is always, but playing a few friendly games before that, I feel could have been better. But since due to the lack of windows, and maybe, and we know that ISL clubs won't release players without a FIFA window, so it looks like it's not going to be easy. Let's be honest. But again, if we don't make it, then that would be the lowest point in Indian football for I don't know how long. And again, that is something that we cannot blame Manolo for. That's completely, entirely of the entire federation and the nation itself. But all said and done, with the teams that you have in your group, everyone, like, technically and statistically, you should be topping your group. There should not be any doubt, because when you have Hong Kong, Singapore, and Bangladesh, well, you should be topping your group. But again, we know what happened. We know what happened in that game against Bangladesh, where we drew in the last minute Adil Khan header in Kolkata, saving India from a horrific loss. So again, we have that, and like, as reports are coming out, Hamza Chaudhry could feature for Bangladesh. Like, He the could. the BFA is trying very hard to make it possible. It's not confirmed and finalized yet, but he could. He could, and not just him. They're trying a lot of other PIO, like people of Bangladeshi origins, to get them into the squad. As like we know, and this works, as we've seen the rise of Indonesian football. We saw, like, what they're doing in the round three of qualifiers is just mind blowing. But again, you see, you remove players of Indonesian origin from the squad, and see how Indonesia are doing in the Asian, like the currently ongoing Asian Cup. They're struggling to beat sides like Myanmar, or struggling against these sides. But then you see them go and beat Saudi Arabia, Australia, and you're suddenly like, wait, what is this? So that works. So if India needs this short term solution, this is a short term solution. Let's be clear. It's not a long haul, long term solution that you'll get. But for the short term, if you want to have an impact, India should also, for football, start looking at OIC and people of Indian origin, players that are playing abroad. That could work. That's the same. I mean, same old Indian football debate. I Exactly, personally, exactly. It's the same old. Like, Indian football has not, as I said, the when your association is in a mess and everything is going haywire, football will take a back seat, and we'll only be keep talking about the same old stories that we've been talking about, because football isn't moving forward in this country. It is in fact moving backwards. So we keep on talking about the old things. You yeah. see the quality, of referees in a league. Okay, I get it. Referees are humans. They make mistakes.
every referee in the world everywhere makes mistakes. You have a solution, VAR. Now, if AIFF tells me we don't have the money to implement VAR, come on, your broadcaster that shows the game is providing multi viewing camera angles, multiple. You have the action cam, you have the player cam, you have the ball cam that is available to the viewer who is viewing it from at home. Can't you just install a TV and play that feed to it that you have in the media boxes upstairs in every stadium, the TV that relies the game on the TV screen? You need that same setup right there. You don't like We do not need high tech VAR like you have in uh, the EPL and Europe. You could just use that for reference for very harsh decisions and stuff. But But no. but on AFF defense part on this topic particularly, I mean, what I do know, I mean, I might not know the full story, but what I know is when you implement a TV system, you have to have purchased a licensing from so and so company as per the direction of FIFA, whoever is making the rules. So that is there. But if Indonesia, if Malaysia, all are using, Hi, Bhutan is using light VR light. भाई we are Forget like these are Indonesia, Malaysia, Bhutan. भाई, and I'm carrying forward what you wrote on Field Vision. I remember Kushal Das once saying we have a corpus of 50 lakh rupees. So that corpus is 50 crore, second I feel. best. Sorry, 50. 50 crore. I missed a zero there. Uh, that is the second biggest corpus after BCCI. No sports authority association in India has the 50,000 budget, has 50 crore rupees in their bank accounts as assets, as money. Not even your wrestling federation, not even your hockey federation, the two sports which are doing marvelously well. There is, they are even the athletic federation where we are seeing number of good performances in the later years, even with so much of sponsorship coming from private and government. AIFF has the biggest, second biggest corpus in Indian sports. This thing, and with so much of money, I mean, भाई इतने पैसे में तो उज्बेकिस्तान एंड ताजिकिस्तान दोनों अपना लीग कवर कर लेती है, एंड टीयर 2 अरब नेशंस वो 50 करोड़ में उन तीनों लीग कवर कर लेती है विद द मनी दे हैव, विद 50 करोड़ रुपीस में वो तीन तीन लीग हो जाएगी, एंड विद 33 गेम्स। यहाँ 24 गेम्स होती नहीं है, यहाँ पे क्वालिटी ऑफ फुटबॉल इज अ बिग जीरो। वहां पे 33 गेम्स, along with they play AFC games, and then they have this Central Asian and the Arab Cup as well. So they play around 50 games with the same sort of budget. उनके ऑफिस बेरर्स इतना, टू बी ब्लंट, वेरी ब्लंट, इतनी सैलरी नहीं होती उनके। सेक्रेटरी जनरल, प्रेसिडेंट, उनकी इतनी सैलरी नहीं होती। I remember when Field Vision did Juan Pedro Benali's interview you conducted by Yes. he spoke about Morocco. भाई मोरक्को was not that उनको पास बहुत पैसा नहीं था, even though they are culturally near to Spain and Europe, they didn't have the money, but they had the vision, and they had that willpower to do that. They had willpower to हाँ भाई हम करेंगे, वो करेंगे। उन लोगों ने जो जितना ग्रोथ किया है
for the last 10, 12 years in football, it's immense. I mean, 10-15 साल पहले you didn't have Morocco as a world beaters के उनके players भी उतने ज्यादा नहीं थे कि they would play for elite clubs. Now you have Moroccan players playing for elite clubs. You can Exactly, debate. exactly. You can debate. Yeah, they were born in Spain, they were born in France, this and that. But उनके खुद के ग्रास रूट के प्लेयर्स भी यूरोप जाके खेल रहे हैं. What is India doing? Their youth teams doing well. Even in the Olympics uh, that happened last year, I guess they won bronze medal or they came fourth. I don't remember the exact thing, but they were in the semi-finals. That is what it is. अफ्रीका की लास्ट ईयर अफकॉन में एक नेशन था. देयर पॉपुलेशन इज लेस देन व्हाट अहमदाबाद इज. वो लोग अफकॉन खेल के वो लोग क्वार्टर फाइनल अफकॉन का सेमीफाइनल खेल सकते हैं. एंड दे आर अ पुअर कंट्री. इफ दे कैन डू इट, व्हाई नॉट इंडियन फुटबॉल? पैसे तो है, बट यू डोंट नो वेयर टू स्पेंड इट. You just are there to fulfill your agendas or whatever it is. You don't care about Indian football. So that is it. And So like that, it's true, it's absolutely true. I mean, क्या ही मतलब, it's again that same cycle कि भाई गेम्स के पहले भड़ास निकालो, ये बोलो वो बोलो, सेम साइकिल सेम साइकिल सेम साइकिल. It's मतलब वही है. So that's why AFC Cup का draws में भी like I'm not like over the moon type stuff, but क्या ही करे अभी. अब यही तो चल रहा है यहाँ पे बस. So less the hope. So we have Talal bhai with us, joining us all the way from Lahore, Pakistan. कैसे हो भाई? मैं बढ़िया. आप कैसे हैं? बस चल रहा है. तो हम लोग अभी वही AFC का ड्रॉ के बारे में बात कर रहे थे. हमारा पार्ट तो हो गया. आपका बताइए, आप लोग का उधर में कैसा है कि मतलब हाउ इज द मूड देयर विद द ड्रॉ एंड स्टफ. आई हैव सीन पोस्ट दैट पीपल आर सेइंग यू गाइस हैव एन इजी ग्रुप, बट वी नो व्हाट यू थिंक. प्लीज. नहीं, यहाँ पे यही है, जैसा लोगों का नॉलेज है, लाइक पीपल डोंट नो मच अबाउट फुटबॉल. लोगों को ये लग रहा है कि सीरिया है, एक वॉर टॉर्न कंट्री है, अफगानिस्तान है, वहां पे लोगों को तो कुछ खाने को नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है. तो उनको ऐसा लग रहा है कि उनको फुटबॉल भी नहीं खेलना आता. लेकिन दिस शोज द लैक ऑफ नॉलेज यहाँ पे पाकिस्तान के जर्नलिस्ट का. मतलब किसी आम लोग बंदे से या किसी कॉमन आदमी से क्या एक्सपेक्ट करना है जब पाकिस्तान के स्पोर्ट जर्नलिस्ट ऐसी बातें कर रहे हैं कि जी सीरिया और अफगानिस्तान और वो जो म्यांमार है, म्यांमार का पाकिस्तान के लोगों ने मीडिया में बस ये इतना नाम सुना है कि जी वहां पे वो उसकी आन सूची की गवर्नमेंट थी और वहां पे बहुत बुरा हाल है लोगों का, और वो रिफ्यूजी कैंप्स में रहते हैं, तो उनको फुटबॉल का तो कुछ पता नहीं है म्यांमार का. तो ऐसे ही फिर वो कमेंट्स आते हैं लोगों के. बट हमें भी पता है कि पाकिस्तान इस ग्रुप में जिस तरह हमने वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में देखा था कि 6 मैच खेले थे और उसमें मोर देन 20 कंसीड किए थे, बस एक गोल स्कोर किया था. तो जो जिनको फुटबॉल का पता है उनकी इतनी अच्छी एक्सपेक्टेशंस तो नहीं है, लेकिन वही बात है कि कुछ खेलने को मिल रहा है, यही बहुत बड़ी बात है. यानी आपको पता है कि जिस तरह पाकिस्तान फुटबॉल का हाल है कि हम लोग इतने साल बैन रहे और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो जाती थी, और अभी रिसेंटली फिर सुनने में आ रहा था कि जी वो इलेक्शंस नहीं हो रहे, तो जो जिन ग्रुप ने पहले भी कुछ हल्ला बोल दिया था जाके ऑफिस में, वो फिर कुछ ऐसा कुछ करने का सोच रहे हैं और हाई कोर्ट में जा रहे हैं कि कुछ ऐसा करें कि वो जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी है जो फीफा ने बनाई है उसको हटा दें. बट अगर ऐसा होता है तो फिर वही बात होगी कि फीफा बैन कर देगा पाकिस्तान को. तो फिलहाल तो हमें इस ग्रुप से इतनी होप हो ना हो, ये होप करनी है कि वो लोग दोबारा अटैक ना कर दें जो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन है उसके ऑफिस को. Right. और लाइक स्टीफन कंटिन्यू करेगा, और लाइक यू गाइस आई वाज हियरिंग स्टीफन माइट लीव. तो
What's the scene with the coach and thing? स्टीफन जो है उसको सुनने को बहुत कुछ मिल रहा है, और क्रिकेट के जो हमारे कोचेस हैं उनकी तो पेशेंस इतनी नहीं होती। हमने देखा ही है कि जिस तरह गैरी कस्टन छोड़ के चला गया, जिस तरह जेसन गिलेस्पी के साथ हुआ, तो होपफुली स्टीफन जो है उसकी थोड़ी पेशेंस होगी और वो हमारे मीडिया के और ये इन सब लोगों के जिस तरह से कमेंट सुनता रहेगा। बिकॉज जब फीफा क्वालिफायर थे तब आप लोगों ने देखा ही होगा कि जिस तरह के कमेंट थे कि जी इतनी छोटी छोटी टीमें थी ग्रुप में और पाकिस्तान ने एक भी मैच नहीं जीता, 20 गोल्स कंसीड कर दिए, ऐसे लोगों के कमेंट्स थे। उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हो रहे थे कि वो बाद में उसने अपना सर पकड़ लिया कि ये कैसे क्वेश्चंस हो रहे हैं मेरे से। लेकिन फिर उसको सब बाकी जो फुटबॉल को थोड़ा समझते थे उन्होंने समझाया कि यहाँ पे लोगों को फुटबॉल का नहीं पता, इतनी लैक ऑफ अवेयरनेस है, तो आपको थोड़ा अपना पेशेंस बढ़ाना पड़ेगा। तो होपफुली उसका पेशेंस लेवल हाई रहेगा, वरना फिर जब इस तरह के क्वेश्चंस होंगे तो फिर वो भी गिलेस्पी और कस्टन की तरह छोड़ के भाग जाएगा। But on a very serious note, whoever's watching from Pakistan, Afghanistan is a very good team. they उन लोगों ने हमें हरा दिया था लास्ट ईयर मार्च में, गुवाहाटी में आके हमको हरा दिया था, विच इज अ नो मीन फीट। आई मीन हाँ हमारे यहाँ भी एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज है, बट defeating India in India with that level of squad speaks about Afghanistan as a team. उन लोगों में ऐसा कोई है नहीं कि भाई एक बड़ा टैलेंट हो, क्या उनका जो यूएसपी जो है, इट इज अबाउट देयर टीम। वो एक साथ के जैसे क्रिकेट में देखा है कि दे प्ले एज अ टीम, और वो टीम बनकर आप पे हमला करती है। एंड इफ यू आर नॉट क्लिनिकल एंड इफ यू आर कॉट स्लीपिंग, दे विल हिट यू। Even in Myanmar's case, which you guys will be playing, Myanmar का Indian women's team recently Myanmar के खिलाफ under 21 म्यांमार टीम के सामने खेली थी। इंडिया लॉस्ट वन, इंडिया लॉस्ट वन एंड ड्रू वन। तो वहां पे भी उनका इतना वॉर टोन कंट्री होने के बावजूद दे हैड अ जापानीज कोच इन द वुमेन्स टीम। सो अगर वुमेन्स टीम में वो जापानीज कोच है उनका, तो यू वुड एक्सपेक्ट कि उनकी मेंस टीम में अच्छा कोच रहेगा। एंड फ्रॉम दैट ग्रुप आई बिलीव सीरिया या म्यांमार, इफ म्यांमार हैज इन देम कि वो सीरिया को बता दे कि भाई नो दे कैन। Syria is going through clear. I mean, it's understandable कि भाई सीरिया favorites. I'm not saying they're not, but Myanmar is a side. They'll give a fight. They'll give a fight. They'll give a fight. And if Syria does what India did against Afghanistan, then you might never know. And like the biggest thing about Afghanistan is, I was chatting with the players here in Guwahati also. 90% of the squad live in, Germany. Not Germany particularly, but in Europe mainly. Majority of them are German based. They play in the lower level leagues there. Now everyone knows playing in third tier Germany or fourth tier Germany is better than playing in any top tier league in India or subcontinent. You don't have that quality leagues here in the subcontinent. So Afghanistan's main issue is like majority of their players are foreign based. Some are Afghan based, and like they had 2 players in this squad who do not even have a club. उनके वो क्लब भी नहीं थे। उनको एशली वेस्टवुड ने एक कैंप किया था काबुल में, जहाँ पे काबुल एंड कंदाहार में, जहाँ पे बच्चे आए और जिनको पसंद आया वहां से 2 बच्चे उठा लिए। कि मतलब लिटरली गली से खेलने वाला प्लेयर्स उठ के एंड दे आर लाइक से उठा के स्टार बनाऊंगा। Now the biggest issue that Afghanistan will face is that they do not have Ashley Westwood, which Hong Kong, and like वही है कि मतलब एक टीम से हमको हरा के अभी वापस एक ऐसा टीम में गया है कि उसका वो हमारे ही ग्रुप में है। सो फिर से अभी ये ना हो जाए कि इंडिया टीम
इंडिया टीम हांगकांग से इंडिया ना पहुंचे, वो उससे पहले पहुंच जाए हांगकांग से आप, तो ये ना हो। नहीं, इवन इवन ये सीरिया और म्यांमार भी सेम ग्रुप में थे जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स हुए हैं, उसमें ये सेम ग्रुप में थे, और जो म्यांमार में मैच था वो 1-1 ड्रॉ था, और जो सीरिया का होम गेम था वो ऑब्वियसली उधर भी ऐसे ही चल रहा है जैसे अफगानिस्तान पाकिस्तान में सिचुएशन है, तो उनको दे हैड टू प्ले इन सऊदी अरेबिया एंड सीरिया वन 7-0। तो सीरिया है तो बहुत स्ट्रांग म्यांमार से भी, लेकिन और म्यांमार अवे इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर एवरी टीम। या म्यांमार अवे बहुत सब टीम का फटेगा भाई, ये तो बात श्योर ऐसा है। ही है, ऐसा ही है। वहां पे और तुम सऊदी कतार इनको भी लेके जाओ तो इवन दे फेस, मतलब एल्टीट्यूड वेदर सब चीज लेके वहां पे फटने वाला है सब टीम को। ऐसा ही है, ऐसा ही है। और पाकिस्तान अफगानिस्तान का बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज उनके पास तो एक्स्ट्रा मोटिवेशन है ही, लाइक जो लास्ट ईयर क्रिकेट वर्ल्ड कप का मैच था, उसमें भी जब वो जीते थे तो उसने यही कहा था कि पाकिस्तानियों ने हमें बाहर निकाला था अपने मुल्क से, तो हमने बदला लिया है। तो वैसे ही कुछ होने वाला है इसमें फुटबॉल में भी, कि इसमें तो वो है भी स्ट्रांग, तो इसमें तो वो कहते हैं ना कि एक मारेंगे और 10 मारेंगे, गिनेंगे एक, कि ऐसा मारेंगे वो। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान से हार गया तो यहाँ के जो जर्नलिस्ट हैं उनको समझ तो कुछ नहीं आएगी गेम की, उन्होंने एंड में स्कोर कार्ड चेक करना होता है, हाँ जी स्कोर क्या था, मैच नहीं उन्होंने देखना। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे हैं रिपोर्टिंग के, अगर कोई रिपोर्टर मैच देख भी रहा हो, दूसरा रिपोर्टर उसको कहते हैं मैच क्यों देख रहे हो, एंड में स्कोर देख लेंगे ना, मैच देख के क्या करना है। तो यहाँ पे तो उन्होंने स्कोर देखना है, अगर अफगानिस्तान ने हमें पेल दिया तो फिर तो यहाँ पे ऐसा कुछ होना है ना बवाल। There are, on a very light note, पाकिस्तान अफगानिस्तान एंड इंडिया बांग्लादेश, दो बहुत बड़े गेम्स होने वाले हैं वो दोनों बहुत ग्रुप। एग्जैक्टली दीज टू, लाइक पाकिस्तान अफगानिस्तान इन दैट ग्रुप एंड इंडिया बांग्लादेश इन दिस ग्रुप। भाई सब कॉन्टिनेंट उस दिन होगा। ये और बिकॉज फीफा ने बहुत मजे का ग्रुप बनाया है। फीफा एएफसी दोनों मिलके एकदम मजे का ग्रुप बनाया है कि भाई मजे लेते हैं, हम दूर से बैठ के देखेंगे और मजे लेते हैं बस। आपके वाला ग्रुप तो भाई बहुत पीस लविंग ग्रुप है। नहीं, हमारे ग्रुप में तो वो जो है ना नेशनल एंथम से पहले वो बजा करेगा, ओ सब ग्रुप में ऐसी टीमें हैं कि बस एक से एक बढ़ के। बट यस, पाकिस्तान वाला गेम आई होप दे, वो लोग एक आध अफगानिस्तान अगेन, गेम। ऋत्विक सॉरी अगेन, आई थिंक अफगानिस्तान वही फिर से सऊदी में ही खेलेगा, आभा में, वही तो उनको सेंटर दिया गया है, बिकॉज आई आई डोंट थिंक थिंक एनी टीम। दमाम में खेलते हैं। तमाम ही हमारे साथ आभा में खेले थे। हमारे साथ आबा में गए थे, बट उसके पहले वो लोग दमाम में खेले थे। हाँ मे बी, हाँ कुड बी। वो म्यांमार हाँ, वाला दमाम में खेले थे। नहीं म्यांमार वाला दमाम ना, हाँ म्यांमार उस वाला दमाम। उस नहीं तो म्यांमार नहीं था, दूसरी टीम थी शायद। कुवैत वो कुवैत किंग फहद स्टेडियम में, मोहम्मद बिन फहद हाँ वो स्टेडियम है। कुवैत के सामने, वो कुवैत के सामने खेला था। कुवैत वाला गेम उन लोगों ने दमाम में खेला था। सो दे हैव, आई मीन वो लोग खेल सकते हैं। आभा में चीज ये है कि किसी भी टॉप टीम ऑल्टीट्यूड। आएगी तो ऑल्टीट्यूड इशू होगा। हाँ और वो तो होगा। शायद पाकिस्तान के सामने दबाव में खेलते, बट what they'll want is they will play teams like Syria and Myanmar in ABBA, क्योंकि पता है कि भाई ना ऑल्टीट्यूड म्यांमार आई डाउट, हाँ कुड बी आल्सो, क्योंकि हाँ म्यांमार का भी ऑल्टीट्यूड एक्सपीरियंस है उनका भी। तो सीरिया के साथ तो आभा में आई थिंक, क्योंकि सीरिया उनके साथ दमाम में खेलेगा शायद। यस, सीरिया तो दोनों खुद सऊदी में खेलेंगे। दोनों ही सऊदी में खेलेंगे इन ऑल लाइकलीहुड, अंटिल अनलेस कोई और यस एंड यूएई या कतार में शिफ्ट ना हो जाए। हाँ, तलाल भाई क्या सीन, इस्लामाबाद स्टेडियम का क्या सीन है? मतलब लग रहा है कि 6 गेम्स होंगे पाकिस्तान में। नहीं 3 होने हैं ना, टोटल तो 6 होंगे। 3 हमने जो खेलने हैं होम पे। लास्ट टाइम भी यही हुआ था कि वो
वहां पे कबड्डी मैच खिला दिया था उसी स्टेडियम में, जिना स्टेडियम में, क्योंकि इस्लामाबाद में प्रॉब्लम ये है कि एक वो जिना स्टेडियम ही है जो वहीं पे डेविस कप भी खिला देते हैं, उसी कोर्ट को ग्रास कोर्ट बना देते हैं, उसी कोर्ट उसी स्टेडियम के अंदर एथलेटिक्स चल रहा है। एथलेटिक्स तो चलो चलता ही रहता है, लेकिन उसी में कबड्डी हो रहा है, उसी में सब कुछ। मुझे याद है मैंने इंडिया पाकिस्तान कबड्डी मैच बहुत साल पहले भी इसी स्टेडियम में देखा था। तो उसी स्टेडियम में सब कुछ होता रहता है, तो बस उस स्टेडियम को खोद ना दें तो तब तो चलता रहेगा। फिर प्रॉब्लम वही है कि किसी को उस तरह से इंटरेस्ट भी नहीं है फुटबॉल में, तो लोग उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। पता है कि और कोई इनके पास ऑप्शन नहीं है, पीएफएफ के पास कुछ पैसा मांग लेंगे, कुछ सिक्योरिटी के नाम पे कुछ मांग लेंगे। तो होपफुली ऐसा कुछ ना हो, और जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है वो सपोर्ट करता रहे, तब तो वहां पे हो जाएगा। वरना एक ऑप्शन ये भी है कि ये लाहौर में पंजाब स्टेडियम है, यहाँ पे भी बात चल रही थी कि यहाँ पे भी मैचेस होने चाहिए, क्योंकि लाहौर में ऑब्वियसली पॉपुलेशन ज्यादा है, फुटबॉल लवर्स बहुत ज्यादा हैं, तो चाहते हैं कि वो इस्लामाबाद से लाहौर में भी शिफ्ट हो। तो अगर लाहौर में होता है तो फिर ऑब्वियसली क्राउड बहुत ज्यादा होगा, और तब एक एटमॉस्फेयर बड़ा अच्छा बन जाएगा। बट आई थिंक अफगानिस्तान वाला मैच इस्लामाबाद में ही होगा, क्योंकि वहां पे भी उन्होंने कुछ सिक्योरिटी के कंसर्न शो कर देने अफगानिस्तान ने, तो आई थिंक वो इस्लामाबाद में होगा। और दूसरी चीज ये कि जब बात हो रही थी कि वो जो नाइट वो जो लाइट्स का सीन था, जो लास्ट ईयर आपके मैंने ट्विटर पे देखा था कि फैंस वर रिक्वेस्टिंग द पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड कि भाई वहां पे रात को लाइट लगा दे, तो भाई लेट किक ऑफ हो और आफ्टरनून किक ऑफ हो ना, क्योंकि लास्ट टाइम लोगों के क्या बोलते हैं रोजे थे लोगों के, प्लेयर्स के, तो वो चीज भी आएगा, क्योंकि आई डोंट थिंक मार्च में पर शायद जून में रमजान चालू हुआ। आई डोंट, मुझे पता नहीं है। इस बार फेब के एंड में और मार्च के स्टार्टिंग में होगा ईद। ईद मतलब उसके रोजों के बाद होती है, तो वो मार्च के बीच में ही आएगा। तो आई थिंक 25 मार्च को मैच जो है वो उसमें वो प्रॉब्लम नहीं होने वाला। राइट, तो फिर ठीक है, तो आफ्टरनून गेम्स ही होंगे मोस्ट प्रोबेबली। हाँ, आफ्टरनून ही लग रहा है। पहले यहाँ पे लाइटिंग बहुत अच्छी थी, फिर इन्होंने बस वो रेनोवेशन के नाम पे उतार दी, और फिर वो रेनोवेशन हुई नहीं। तो उससे तो ये लग रहा है कि अब लाइट का प्रॉब्लम पता नहीं, अब 3 मंथ्स हैं, होपफुली वो सॉल्व हो जाए। क्योंकि एक तरह से बहुत अच्छा है कि लाइट में मैच हो, एटमॉस्फेयर अच्छा होता है। कोई तो वजह होती है कि वो लोग प्रेफर करते हैं कि ये चैंपियंस लीग के मैचेस या जो अच्छे फुटबॉल बड़े मैचेस हैं वो रात के टाइम हो, लाइट्स में हो। अगर किसी के ऑफिस आवर्स हैं तो वो घर आ गया हो, और एक थोड़ा बेहतर मूड होता है। तो आई थिंक होना तो रात को ही चाहिए। 3 मंथ्स तो हैं अभी, और टाइम तो बहुत था जब से अनाउंस हुआ सॉरी, शेड्यूल जब अनाउंस हुआ। बट देखते हैं अब लाइट लगेगी कि नहीं, वरना फिर वही दिन के टाइम मैच कराना पड़ेगा। और एक और क्वेश्चन है कि चैंपियंस लीग के लिए जो स्टेडियम पे रेनोवेशन हो रही है, मतलब चैंपियंस बहुत ट्रॉफी। अनलाइक, हाँ चैंपियंस ट्रॉफी, आई नो बहुत अनलाइकली है, बट व्हाट आर दी ऑड्स कि भाई, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी भी उस टाइम पे होने वाली है इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, हाँ, वही 75 फेब डेज, फेब मार्च में। फेब मार्च में शायद चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ये गेम्स है। तो एंड तभी पीएसएल भी नहीं होगा, मैं सुन रहा हूँ अप्रैल से पीएसएल स्टार्ट अप्रैल होगा। में, अप्रैल में। हाँ, तो इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि भाई कराची में या फिर लाहौर में जो स्टेडियम पे रिनोवेशन हो रहा है, 3 स्टेडियम्स में, वहां हो सके? पॉसिबिलिटी लग रही है एज अ पाकिस्तानी आपको? जो पंजाब स्टेडियम है वो जो कजाफी स्टेडियम के बिल्कुल साथ ही है। लाइक अभी तो उन्होंने वो सारा एरिया बंद किया है कजाफी स्टेडियम की रेनोवेशन के लिए, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, और उसके बिल्कुल 50 to 100 मीटर्स के डिस्टेंस पे ये पंजाब स्टेडियम है, जहां पे पाकिस्तान पहले अपने इंटरनेशनल फुटबॉल मैचेस खेलता रहा है। बट वही लाहौर में, क्योंकि ये वही चौक था, लिबर्टी चौक वो उसको बोलते हैं, जहां पे श्रीलंकन टीम पे अटैक हुआ था। तो उसकी वजह से फिर वहां पे सिक्योरिटी, क्रिकेट के मैचेस तो बंद हुए थे, फुटबॉल के भी मैचेस
बंद हो गए थे। तो तब से फिर पाकिस्तान इस्लामाबाद फुटबॉल मैचेस शिफ्ट हो गए थे। तो अगर सिक्योरिटी कंसर्न ना हुआ और पंजाब स्टेडियम भी एक इंटरनेशनल स्टेडियम है और बहुत अच्छे वहाँ पे फैसिलिटीज हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पे मैचेस शिफ्ट हो जाएं। जिस तरह मैंने पहले बात की कि यहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, यहाँ पे फुटबॉल लवर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, तो अगर यहाँ पे होता है तो इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा होगा। बट वही सिक्योरिटी क्लियरेंस पे बात आएगी। राइट शेरी जॉन भाई, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग, Well, नहीं, फिर even I चेल्सी feel, के बारे में बात करेंगे। even I चेल्सी का तो feel, अभी बहुत अच्छा सीन चल रहा है, क्योंकि आर्सेनल का 0-0 चल रहा है एवर्टन के साथ, और उधर लिवरपूल को 2 गोल कर दिए फुलहम ने, तो उससे तो हो गया, ये लग सेकंड रहा हो है गया। ना। अरे अरे भाई लिवरपूल ने थैंक भी यू। कर दिया, अरे लिवरपूल ने वाह, भी कर दिया। 2-2, भाई साहब 2-2। किसने मारा? भाई मैं जब भी यहाँ पे विंडो शिफ्ट करता हूँ गोल मार देता है। माय गुडनेस। उसने रॉड्रिगो मुनिज ने किया था, बट अब वो डियोगो जोटा ने कर दिया, तो 2-2 हो, लेकिन 2 पॉइंट्स अब भी ड्रॉप हो रहे हैं, तो चेल्सी के लिए अच्छा ही है। अब बस कल हम जीते तो बस चांसेस हैं कि फिर वो वापस आ जाएंगे टाइटल रेस में। मैं, मैं आप वही लोग बोला। आ चुके हो टाइटल रेस में, you're in the title race. हाँ, टाइटल रेस में तो है, लेकिन फिर वो प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली बढ़ जाएगी अगर ये 2 पॉइंट ड्रॉप कर देते हैं यहाँ पे लिवरपूल। उनका तो पहले तो ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल चांस ही नहीं कि कोई पॉइंट ड्रॉप करेंगे, इतना अच्छा फॉर्म चल रहा था, बट अब फाइनली पॉइंट्स ड्रॉप होना शुरू हुए हैं। लास्ट मंथ किसी ने मुझसे बोला था कि जी लिवरपूल तो बस इजीली जीत रहा है टाइटल, तो मैंने यही बात की थी कि जो क्रिसमस पीरियड होता है, इसमें जब मैचेस आते हैं और आपकी स्क्वाड डेप्थ टेस्ट होती है, उसमें पता चलता है असल के आप में कितना आपके अंदर है। तो अब तो लग रहा है कि लिवरपूल एक बार स्टम्बल कर गया, वो जैसे स्लिप हो गया, तो फिर उसके बाद लिवरपूल का संभलना मुश्किल हो जाएगा। आप आए थे उससे पहले मैं और सिरिजॉन भाई वही बात कर रहे थे कि भाई दिस पीरियड जो है, दिस इज लिवरपूल्स पीरियड टू स्लिप। ये हमने उनका स्लिपी 2008 स्लिपी 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 सी वो पीरियड। याद है ना, वो 2014 वाला जो जरार्ड डेम्बाबा वाला। डेम्बाबा। स्लीपी जी मोमेंट, स्लीपी जी मोमेंट्स। सो अच्छा, बेसिकली उसमें उसमें ज्यादा लोग उस पर बात नहीं करते कि जो दूसरा गोल था चेल्सी का, वो याद है किसने किया था? साला ने किया था ना। हाँ, साला ने किया था। हाँ, और टोरेस ने असिस्ट किया था, मतलब वो अकेले ही गए थे, बस दोनों कीपर सामने खड़ा था, तो टोरेस ने पास कर दिया, तो सलाह ने गोल कर दिया। तो वो मुझे लग रहा है कि इस बार फिर वैसा कुछ होने वाला है, स्लिप होने वाला है। और उसे एक मैच पहले ये जेरार्ड ने बोला था, वो जब टॉक वो कर रहे होते हैं हडल में कि दिस बेटर डोंट स्लिप, और ऐसा कुछ इसने बोला था, और फिर बाद में ये स्लिप हो गए थे। और उस वक्त तो आई थिंक 9 पॉइंट्स का गैप था इनका और सिटी का। हाँ गेम इन हैंड तो थे उनके, सिटी के 3 मैच कम थे उस वक्त, बट इनके 35 के बाद आई थिंक 79 थे, उनके 32 के बाद 70 के, ऐसा कुछ था, और वहां से इनका स्लिप हो गया था टाइटल। तो इस बार तो अभी तो दिसंबर है, तब अप्रैल में स्लिप हुआ था, अब मुझे लग रहा है कि अब इसी पीरियड में हो जाएगा। नहीं, 2018 2019 2021 3 साल ऐसा है कि भाई क्रिसमस से द उनका इंजरी ओनली टीम, स्टार्ट्स उनका इंजरी स्टार्ट होता है एंड दे जस्ट, एंड उनका ये पीरियड होता है कि दे आर दी ओनली टीम। हर बार क्या होता है कि जो टीम क्रिसमस में फर्स्ट होती है they will go on to win the EPL। बट 4 बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार ऐसा हुआ है कि लिवरपूल has slipped from that position। एंड एज अ यूनाइटेड फैन, मैंने पहले भी बोला है ये शो के स्टार्टिंग में, अभी भी बोल रहा हूँ, 2 दिन अगर चेल्सी फैन का सुनना पड़ेगा इंटरनेट पे सुन लेंगे, बट लिवरपूल फैन सिंगिंग 20 टाइम्स इज नॉट, आई मीन वो पसंद नहीं आएगा हमें। इट्स तो इट्स ओनली कल कुछ चेल्सी का हेल्प करने वाले हो कि नहीं? पक्का भाई चेल्सी, मतलब कल ब्लू पहन के आ जाएंगे हम, पहन लेंगे, भले यूनाइटेड सिटी का गेम हो बट हम ब्लू पहनेंगे। नहीं, अरे हेल्प करो ना, उनके पॉइंट ड्रॉप कराओ सिटी का। सिटी का तो हो, मतलब दे डोंट हैव रिको लुइस,
काइल वॉकर को हमने अभी देख रहे हो आपकी क्या चल रहा है भाई सोशल मीडिया पे। अब रोने का टाइम आ गया भाई का। रूबेन डियास ग्वार्डियोल 2 प्लेयर्स है, बाकी तो बैकलाइन इंजर्ड है, रॉड्री इंजर्ड है। सो यू नेवर नो कि कल क्या हो जाए। हाँ अभी देखो ना, लिवरपूल का भी ड्रॉप होने वाला है पॉइंट। 90 मिनट्स तो हो गए हैं, 2-2 है। आर्सेनल और एवर्टन का भी 0-0 चल रहा है, इनके भी पॉइंट ड्रॉप हो गए। तो सिटी के अगर पॉइंट ड्रॉप करा दो कल, भाई नौ तो नौ चेल्सी के मिनट लिए तो एडेड टाइम परफेक्ट। दिया, 9 मिनट एडेड टाइम दिया लिवरपूल और फुलहम में, 9 मिनट्स इतना दिया है। टाइम, बट उनका 1 मैन लेस है ना, एक रेड कार्ड हाँ भी उनका, हुआ है। हाँ रेड कार्ड हुआ है रॉबर्टसन ने। होपफुली ये 9 मिनट में एक और गोल हो जाए, 1 पॉइंट से भी जाएंगे। गोल हो जाए फुलम का, हाँ फुलम का गोल हो जाए तो लिवरपूल अच्छा का है। नहीं, लिवरपूल का उधर नहीं। उधर आर्सेनल का तो ड्रॉ हो गया, एवर्टन के साथ अपने होम पे खेल रहे थे, तो ये तो इनके लिए और गलत होने वाला है, वो तो बुरा होने वाला है। तो सेट पीस एफसी बन चुका है आर्सेनल भाई। सिर्फ पूरा मैच, मतलब मैं ज्यादातर वही मैच देख रहा था। तू जब जब मेरे को बोला कि गोल हुआ तो मैं चेंज किया। वहां पे मैं जब आर्सेनल का वाला देख रहा था, भाई सिर्फ सेट पीस करता है आर्टेटा भाई। थ्रो इन के लिए भी इतना जोशीला बन जाता है ना आर्टेटा कि भाई थ्रो मिल गया भाई, चलो चलो। तो वही स्टोक चल रहा है। सिटी ऑफ 2020, पुराना जो वो क्या स्टोक सिटी था ना, रोरी डेलप था ना, क्या रोरी डेलप नाम था ना डेलप, यस जो यस फेंकता यस था। यस, रोरी डेलप। रोरी डेलप और पीटर क्राउच। भाई उस स्ट्रोक सिटी का, रॉरी डेलप का इतना भयंकर खौफ था टीमों में। गोलकीपर कॉर्नर कर देता था, प्लेयर लोग कॉर्नर कर देते थे, बोलते थे कि भाई थ्रो इन मत दे इनको। उसका भी सुना था वो बचपन में ना कुछ पत्थर फेंकता था उठा उठा के, कुछ ऐसा था। और आर्सेनल के अगेंस्ट तो इतने स्पॉट ऑन उसके आते थे ना, जो थ्रो इन थे, वो सीधा होता था। आई थिंक वो बंद क्राउच भी हो के, चुका था कुछ ऐसा, तो सीधा हाँ, क्राउच को आता था, क्राउच ठक करके अंदर लो दी गया आर्सेनल। उसका भी अच्छा सही था। था। वो उस सीजन से आई गेस, आई डोंट रिमेम्बर, बट उसी सीजन था कि हम लोग देख रहे थे, क्योंकि मैं जब बड़ा हो रहा था ना, आई आई कम फ्रॉम अ स्मॉल विलेज, तो तब क्या होता था कि भाई एक चैनल पे आता था, एंड क्योंकि मल्टीपल किक ऑफ्स होते थे, तो इट्स यूजुअली आर्सेनल गेम्स और यूनाइटेड गेम्स, दो ही गेम शो होते थे इफ दे वर हाँ उस जमाने हैपनिंग में। एट साइमल्टेनियस टाइम्स। राइट फिर राइट। ये जब हॉटस्टार और वो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आया, एंड देन वी कुड सी मल्टीपल गेम्स एट द सेम टाइम, क्योंकि तब स्टार स्पोर्ट्स हैड ला लीगा राइट्स, दे हैड प्रीमियर लीग राइट्स, दे हैड बुंडेसलीगा राइट्स, तो सबके राइट्स होते थे उनके पास। तब उनके पास इंडियन क्रिकेट नहीं था, तो तब दे यूज्ड टू हेवीली रिलाई ऑन फुटबॉल। ऐसा ही है अब। बस देखते हैं कल रात को वो लेट नाइट है, चेल्सी ब्रेंटफोर्ड, वो भी हम जीत जाएं तो फिर तो ये वीकेंड सही मस्त हो जाएगा। मतलब उनके आर्सेनल के ड्रॉप, लिवरपूल के ड्रॉप, और सिटी के कल ड्रॉप करा दो आप लोग कल। मैं भी मैनचेस्टर यूनाइटेड का सपोर्टर हूँ रात के टाइम, बस इनको सिटी को पक्का भी ड्रॉप करा दो। पक्का पक्का पक्का। डन डन डन। uh, done. Anything else you guys want to speak about? नो नो, आई थिंक वी कवर्ड द लॉट। और Done. थैंक यू सो मच ऋत्विज एंड श्रीजॉन फॉर इनवाइटिंग मी। ऐसे ही बुलाते रहना मुझे, बहुत बिल्कुल अच्छा लगता बिल्कुल है आप भाई, लोगों से बिल्कुल बात करके। बिल्कुल आप लोगों का मैं बिल्कुल। वैसे भी वीडियोस देखता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ, जब मुझे नहीं भी बुलाते तब भी सुनता हूँ। बहुत आपका मजे का डिस्कशन होता है, तो होपफुली ये फ्यूचर में भी साथ करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल Pakka, बिल्कुल भाई, pakka. भाई We will पक्का। we'll cover. We'll have it during the Champions League time as well. या So डन डन cricket we'll का डन भी we'll we'll करेंगे। we will do one Champions League episode too. आप डन डन लोग एक डन। और फिर बात करेंगे क्रिकेट पे भी। Yes. Thank वो तो thank you Sirijan bhai for inviting me. Thank you Talal bhai for joining. Uh, Okay. So thank you. I should be the one that should be thanking, Ritvich and Talal bhai for joining and, making this episode so fun. And, हमारा plan था
आधा घंटे का एपिसोड करने के लिए अब 1 घंटा से ऊपर हो चुका है. यही होता है कि जब when the conversation flows, it just flows. So, and thank you to all the viewers that joined in. Stay tuned to Phil Vision, and we'll catch you up in the next episode. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Bye bye. Done. Bye 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 bye. bye bye. Done.